फरमाएं कि वो हमारे ज़हनों को खोले, हमारे ज़हनों और ज़ुबानों को, कि हम जो कलाम सुनाएं वो हमारे ज़हनों में बैठे, और हम सिर्फ से यहाँ ही नहीं सुने बल्कि उसको अपने साथ लेके जाएं और उसको अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी पे भी इस्तेमाल करें। आज का कलाम जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, दिस इज़ अ सीरीज विच आई बिगिनिंग जो इसकी शुरू हुई थी वो 2 हफ्ते पहले हमारा एक बहुत बढ़कर, जैसे मैंने लास्ट वीक बताया, बहुत बढ़कर प्रोग्राम हुआ। एंड बिफोर दैट ड्यूरिंग दैट प्रोग्राम जब हदिये नसरानी खुदावंद के पास आने की बात हुई तो God gave me a thought and I share that there as well, which is खुदावंद को दें ना कि आप उस पर यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, बट खुदावंद को दें because you trust him. And then last week we talked about it कि ट्रस्ट से मेरा क्या मीनिंग था, क्यों हमें खुदावंद पे ट्रस्ट करके देना है, सिर्फ यकीन करके नहीं, सिर्फ बिलीव करके नहीं कि मैं खुदावंद को दे रहा हूँ, because that changed our mind, that changed our prospect of giving, कि हम खुदा को एक्चुअली चंदा जो हम जमा करते हैं या दया की जो हम देते हैं उसका मकसद क्या है। हमने लास्ट वीक एक बात कही थी अपने ख्याल आपसे शेयर करने से पहले, जो खुदा मुझे दिया कि प्लीज़ अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगे, क्योंकि मुझे पता है जो ही हम फाइनेंस की बात करते हैं, जो ही हम पैसे की बात करते हैं, लोग एकदम चर्च के लिए चौकन्ने हो जाते हैं। इट्स नॉट फ्रॉम द चर्च, इट्स फ्रॉम द बाइबल, जो खुदावंद हमें हिदायत देता है। और मैं आपसे माजरत चाहता हूँ सुनने वालों के लिए कि अगर आपको ये बात बुरी लगी है, लेकिन कई दफ़ा बुरी बातें ही होती हैं जो हमें सिखाती हैं कि हमें वो भी करना है। खुदावंद के पाक कलाम के कुछ चुने हुए सिलेक्टेड आयतों को ही अपनी ज़िंदगी में नहीं एक्सेप्ट करना, बल्कि उन आयात को भी करना है जो खुदावंद ने हमें अहकाम दिए हैं, जो हमारे लिए सख्त है। So we talked about tithe last time, and मैंने बात की थी 100 प्लान की जो मुझे मेरे चर्च से मिला। And 100 plan is also known as 10-10-80 plan. What is 10-10-80 is, मैं थोड़ा सा summarize करूँगा, then I'll go to move forward and be real quick. 10-10-80 plan is 10% for God, 10% for your saving, and 80% we live off. And why we talk about it? Because first God, खुदावंद पहले हमारी कमाई में से, और ये आज से नहीं, ये शुरू से खुदावंद हमें बहुत से काम ने जिसमें खुद को अपने पहले फलों का मेरे पास लेके आ, पहलौठा मेरे पास लेके आ, कुर्बानी के लिए, अपने बच्चे को देने के लिए। सो ये सब चीज़ें पहले। दूसरा एक बफर है जो कि हम सेविंग्स के लिए यूज करते हैं, जो आगे हमारे काम आएगा। और तीसरा वी नीड टू लिव ऑफ। एंड व्हाई आई टॉक अबाउट इट, बिकॉज़ दिस इज एन अमेजिंग प्लान व्हिच वर्कड फॉर मी एंड Rema very well. Before we go, I want to share my personal testimony also at the end, and I hope everybody stays with us to listen this, and I hope that will change some lives as well. So जब हम इसको आगे देखते हैं तो इस God, me and me plan, और इसको दूसरे तरीके से देखें अगर हम उसे नहीं अपना रहे हैं तो इट्स me and God plan. पहले मैं रहूँगा 80% पे, 10% मेरी सेविंग होगी, और जो 10 बचेगा, अगर बच गया तो मैं खुदा को दे दूँगा। कि हमें इस तरीके से सोचना है, या पहले खुदा को देना है, फिर सेविंग्स, एंड फिर we live off. And once we get a habit of this, I promise कि अगर हमें शक्ति भी आती है, हम 80% में रहने के जब आदी हो जाते हैं तो it helps us a lot. Now, why I'm sharing that thing? जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ट्रस्ट की, कि खुदावंद हमें ये कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो। किसी ने बहुत अच्छी बात की है, मैं अपने फोन से इसको पढ़ रहा हूँ। You can never trust God until you trust Him in the area of your finances, because that's what we all love. हम लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं ताकि हम अच्छे रोजगार को कमा सकें। सो अगर एक रेशो देखें कि हमारी फेवरेट चीज़ें क्या हैं, तो दैट इज फाइनेंसेस इज आवर फेवरेट थिंग, पैसे जमा करना। And money is root of, they say all evil, but money is very much needed in our life, and we need to have that to grow. Money is number one reason of stress also. Number one reason of divorces. Number one reason of family fights. Number one reason of brother versus brother, like we talked about last week. कि कैसे कहाँ से ये बात शुरू हुई, जहाँ खुदाम यसू मसीह ने एक पैरवल हमें दी। मनी को हैंडल करना इज वेरी
how we do that, that's what God teaches us. And once we adapt that in our life, it changes. It completely changes. बात वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि ट्रस्ट और बिलीव में क्या फर्क है। जब तक मैं खुदावन पे ट्रस्ट नहीं करता कंप्लीटली कि वो मेरी फाइनेंसेस, मेरी लाइफ को ले ले, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। सो ट्रस्ट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। मैं एक आयत है जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई पढ़ ले। दैट इज फ्रॉम जॉन 6:6, यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 6वीं आयत। दाऊद के जिंदा पाकलामे से भी बना 6 बाब उसकी 6 आयत में यूं लिखा है, मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। आमीन। खुदावंद के पाकलाम के पढ़ें। Jesus asked this only to test him, for he has already had in mind what he is going to do. अब इसकी स्टोरी क्या है, इसके पीछे इसकी बैकग्राउंड क्या है। हम सब जानते हैं कि बाइबल में एक कहानी है जिसमें खुदा यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं। ये जो बाइबल में से वर्स पढ़ी गई है, ये वो है। खुदावन के एक शागिर्द उसके पास आते हैं और खुदावन से ये कहते हैं, खुदा यीशु मसीह से ये कहते हैं कि खुदा इतना बड़ा हजूम है, हम इनको खाना भी खिलाना है और हम इनको खाना खिलाने के लिए हमें बहुत से फाइनेंसेस चाहिए, बहुत सा हमें पैसा चाहिए ताकि हम इन लोगों को खिला सकें। और बाइबल में ये बताती है कि वहाँ पे 5000 मर्द थे। 5000 मर्द से मुराद ये है कि वहाँ पे औरतें और बच्चे भी थे, विच इज टोटल ऑफ अबाउट 15,000 पीपल। वो शागिर्द खुदा यीशु मसीह के पास आके उनसे पूछता है कि खुदावन मुझे ये बता कि हम लोगों को करें क्या, आप कलाम तो दे रहे हो पर ये लोग भूखे प्यासे कई दिनों से आपको फॉलो कर रहे हैं, प्लीज इनके लिए कुछ करें। खुदावन यीशु उससे टेस्ट करते हैं उससे कि बता कि हम क्या करें। तब वो ये कहता है कि हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 लिबड़ी मछली है। खुदा यीशु मसीह को ऑलरेडी पता था कि उसने क्या करना। And we're going to read all that phrase, but I just wanted to point this verse out that Jesus already knew what his plan is, but sometimes he tests us. खुदावन हमें बरकत देता है ये देखने के लिए कि आया हम उसको वापस रिटर्न में क्या करते हैं। And then we know the story, फिर कैसे खुदावन ने उसके ऊपर दुआ की और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों से 15,000 लोग, बाइबल कहती है 5,000 मर्द, लेकिन औरतें बच्चे मिला के researchers say that there must be 15,000 people who ate that. तो 15,000 में से how many know कि कितने टोकरे, कितनी छापियां बच गई? किसी को याद? From that 5 रोटियां और 2 लिटी बिटी मछलियां, 12 टोकरियां फिर भी बच गई। 15,000 टमीज फीड होने के बाद। See, there was a trust. एक बच्चे ने भी कहा कि मेरे पास 5 रुपये 2 मछलियों को दे के आया, और खुदावन ने दुआ की और कैसे 15,000 लोग 12 रुपये फिर भी बचते। Some people say कि जैसे मैंने पिछले वीक बाइबल में से वर्स निकाली थी पुराने अध्याय में से, और वो कहते हैं कि दया की गई जिक्र पुराने अध्याय में है, नहीं में नहीं मिलता, लेकिन हमें नए अध्याय में कई ऐसी स्टोरीज मिलती जिसमें खुदावन हमें बार बार तंबीह करते हैं, बार बार ही वांट अस टू ट्रस्ट हिम। कई मौजज़ात हम देखते हैं खुदावन के जिसमें खुदावन हमें कुछ ना कुछ करने के लिए कहते हैं। खुदावन यीशु हमें कहते हैं कि जा हौज तक जा, वहां पे अपनी आंखें धो ले। ही वांट अस टू डू समथिंग फॉर हिम। Trust always required action. There is no action, there is no trust. अगर हम लोग ये कहें कि हम खुदावन पे बहुत भरोसा करते हैं, खुदावन हमारे यकीन है, खुदावन हमारे लिए ये कर, खुदावन हमारे लिए वो कर, लेकिन हम लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो then our iman is just talking. There is no action, then that means there is no trust in God. That's why I want to give this thought to everybody. The last week has been बताया कि please believe in Jesus, believe in God, believe in Holy Spirit, but please एक और word इसमें add कर लें, I
I trust God also. That's why I brought up that giving portion. That's why I brought up कि सिर्फ और जैसे मैं पैसे की बात, सिर्फ आप पैसे से नहीं, आप अपनी खिदमत से भी अपने आप 40 घंटे काम करते हैं, आप कहते हैं यार कई लोग 80 घंटे काम करते हैं, कहते हैं यार मैं थक के चुका, मैं नहीं जा नहीं सकता। लेकिन अगर आप 80 घंटे काम करें और उसके बाद आप सिर्फ 80 में से 8 घंटे एक वीक में से खुदावन को दे दें, कोई पकड़, बाइबल कोई चर्च में कई काम होते हैं, कुछ पकड़ है, तो that is 10%. That's 10% of your giving to God. Not only by cash, but your personal self involvement in church, in some organization. और जैसे मैंने last में कहा था, it's not only for Christians. अगर कोई मुस्लिम भाई कोई human भी ये सुने, and they will do that, they'll be extraordinarily joyful. And they say, just for the record's sake, people live longer who live happy. And once you have that joy and happiness, कि मैंने ये किया, I did this for God, that increases wealth, increases life, increases smiles, increases confidence. And that's the most important thing that we need right now, right? You know, we have lack of happiness, we have lack of confidence, we have lack of, and that's why all the psychological diseases are attacking us. People are more sick psychologically than by health. So all it starts is with 10%, and that's why it's amazing that our Bible coaches us this thing. Ego bahar ka plan nahi. It's in our DNA. जो हमें विरासत में मिला. That's like an amazing thing to do. Trust के लिए मैं एक और कहानी बाइबल में से आपको बताना चाहूँगा, एक और किस्सा जो एलिजा नबी के दौर का है. And I'm gonna just give you a fast and short words and story about it. Instead we go and read it, and I highly recommend that you go home and read. पहला सलमी में है. एलिजा नबी एक शहर के अंदर एंटर होते हैं, and he see a widow, a single mom who have one child, and वो वहाँ पे कुछ सूखी लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं. एलिजा को थोड़ा और पीछे जाकर थोड़ा सा आपको दे दूँ, खुदावन ने उसको तब्दील की थी, खुदावन ने उनको हदायत की थी कि आप प्लीज जाओ वहाँ पे, and I will provide you, don't worry, just go there and आपके लिए फूड वगैरह सब कुछ वहाँ होगा. वहाँ जाते हैं, वो उस औरत को देखते हैं. एलिजा को he already trusted. We all know Elijah was, prophet of God, और उनका बहुत high regard है बाइबल में. He had very high writings about him. He was very very close to God. वो जाकर उस औरत को कहता है कि मुझे ये बता कि तेरे पास कुछ खाने को है. वो औरत उसे कहती है कि मेरे पास आटा है और मेरे पास थोड़ा सा तेल है एक कुप्पी में, तो मैं ये खाऊंगी, मेरा बच्चा ये खाएगा और हम खा के मर जाएंगे. एग्जैक्टली इसी तरीके से उसका जवाब है. Now I just want you to picture one thing. Single mom. We all know one or two single moms in our families and our lives, and we all know how tough their lives are. अब आप सिंगल मॉम को अमेरिका में मत सोचो, अब आप उसको पाकिस्तान में सोचो, बिकॉज अगर पाकिस्तानी कल्चर हम देखते हैं तो वैसा ही कल्चर उस टाइम इजरायली कल्चर था जब औरत को शी वाज अ सेकंड ग्रेड सिटीजन. इट्स द सेम एग्जैक्टली. वो औरत जिसको कोई जॉब नहीं मिल रही, जिसके पास कोई फ्यूचर नहीं है, व्हाई शी वाज पुअर, उसके पास कुछ भी नहीं था, शी हैड नथिंग, दैट्स व्हाई शी वाज पुअर. लेकिन एलिजा उसे कहता है कि तू जा फिर भी मेरे लिए खाना लेके आ और पहले मुझे दे. एग्जैक्टली इसी तरीके से पहले तू मुझे दे. नाउ सेम एग्जैक्ट स्टोरी खुदावंद यीशु मसीह अपने रसूल को टेस्ट करने के लिए उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, और जैसे भी हमने बाइबल पढ़ा नया नामे में, इसी तरीके से एलिजा भी उस औरत को टेस्ट करने के लिए कहते हैं कि तू पहले जो उस आटे से. अब आप सिंगल मॉम को अमेरिका में मत सोचो, अब आप उसको पाकिस्तान में सोचो, बिकॉज अगर पाकिस्तानी कल्चर हम देखते हैं तो वैसा ही कल्चर उस टाइम इजरायली कल्चर था जब औरत को शी वाज अ सेकंड ग्रेड सिटीजन. इट्स द सेम एग्जैक्टली. वो औरत जिसको कोई जॉब नहीं मिल रही, जिसके पास कोई फ्यूचर नहीं है, व्हाई शी वाज पुअर, उसके पास कुछ भी नहीं था,
She had nothing. That's why she was poor. लेकिन एलिजा उसे कहता है कि तू जा और फिर भी मेरे लिए खाना लेके आ और पहले मुझे दे. एग्जैक्टली इसी तरीके से पहले तू मुझे दे. नाउ सेम एग्जैक्ट स्टोरी खुदावंद यीशु मसीह अपने रसूल को टेस्ट करने के लिए उनसे क्वेश्चन पूछते हैं. और जैसे भी हमने बाइबल में पढ़ा नए नामे में, इसी तरीके से एलिजा भी उस को टेस्ट करने के लिए कहते हैं कि तू पहले जो उस आटे से जो केक या रोटी बनाएगी वो तू मुझे दे, और जो तेल है उसमें से तू मुझे दे, क्योंकि दैट्स अ न्यूट्रिशन डाइट एट दैट टाइम. और वो औरत पहले ये सोचेगी कि यार मेरा एक बच्चा है, मेरा ये लास्ट मील है, मैं उसे खाऊंगी, मैं उसको खाने के बाद मैं उसको ऊपर इस बंदे को बता रही हूँ कि हम खाएं और मर जाए. और ये बंदा कह रहा है कि तू वो एक लोफ रोटी का आटे का और एक थोड़ा सा जो तेल है वो तू मुझे ला के दे दे. But see here, उस गरीब पुअर सिंगल मॉम का फेथ और ट्रस्ट देखें, खुदावंद का टेस्ट और उसका ट्रस्ट. She bring that roti, she bring that cookie and give it to him. और बाइबल हमें ये बताती है, खुदावंद का जिंदा कलाम हमें ये बताता है कि जितने दिन एलिया नबी वहां पे रहे, वो कुप्पी और वो जार आटे का खाली नहीं हुआ. नया नाम पुराना नाम दोनों हमें ये हिदायत देते हैं कि खुदावंद का एक टेस्ट है and we have to trust him to pass that test. He gives us parameters and we have to go on them. They are tough. They are very not acceptable to us many times, but they are real. If we do that, we will succeed. I want to share one very personal story with you, and I didn't ask Rema to do that or not. Rema's my wife. I am a banker. I worked for North Milwaukee State Bank for many years. कई लोग जानते हैं कि जून 19, 2016 को मेरी और रेमा की शादी हुई. March 1st, 2016 में मैं अपने बॉस के पास गया. उसको मैंने बताया कि मेरी शादी हो रही है, आपने जरूर आना है. And nobody know that as from today. I don't think Pastor Norman knows or anybody know about it. March 28, 2016 को मेरे बॉस ने मुझे नीचे बुलाया from my office and he said the Gulbaz bank is acquired and they are letting go senior staff. तो सबसे पहले senior staff जाता है. And उससे पहले me and Rema had some promises कि हमने यहाँ देना है, you know all that stuff, you know जो हमारे खुदा के पास था. So just so everybody know, they offered me that you know हमारी base जो नहीं होगी Denver में, either you go there or either you know we have to let you go. So March 28, 2016 को I was jobless. June 19, 2016 को I was getting married. Imagine that, the feeling of mine, you know, the pressure I had. I mean, like, what? I don't have a job. I'm so confused. Should I tell Rema or should I not tell Rema? And if I tell Rema, her dad will know that and say, बेरोजगार आदमी के साथ शादी करना अपने बच्चे की क्या करने का? But anyways, I prayed. I told Rema, and she stood with me. He said, "Don't worry, you know, God has better plans for you." And we did our commitments between us. We keep doing our commitments, and thank God, again, 10-10-80 plan helped me a lot. I always have a high regard for this plan. Because that 10-10-80 plan has survived. This is a living testimony. It teaches me to live in 80% of my income. It teaches me to save 10% regardless whatever.
and I had good savings, thank God. And everybody, people who came to my wedding, they've seen there was no tension on my face. That Abdullah is jobless. Matter of fact, I think everybody was happy. So 10-10-80 plan, guys, I highly want you to do that because it changes my life. But then it also tells me that I have a very faithful and tested life partner in my life, which he had provided me. She stood with me. We both fulfill all our commitments. We go to the church. We never hold, Rima said, we never hold or ask how much check we're going to write and all that. And I'm not just saying it to praise, but this is reality. That's how you will be if you follow God's plan. God, me, not me, God. And in September, a lot of people were calling me and saying, Gulbaz, we need a loan, please help us out. And I was telling them, hey, sorry, I'm not in the bank, just go to my friend, and this is my friend, and this and that. And suddenly Rema and I met one of my old friends who was a broker, and when we were coming back, Rema said, why don't you do that? Why don't you become a broker? Why you just refer these loans to somebody else? And that changes my life. For a year and a half, I become a broker. Thank God. Matter of fact, God helped me a lot. And everybody knows, nobody even knew that I don't have a job. That is a proof of it, that our lifestyle never changed. Matter of fact, it increased. खुदा ने बहुत सी बरकतें दी. Then, because of I was doing brokerage, one of the bank offered me that, hey, Gulbaz, you want to come and join us? I did not have a resume. Truly, even after that, I never made my resume. They figure out that Gulbaz is there, and he's bringing loans and all that stuff. We can talk. They offered me a job, and I got the job because we stood what we promised. We never hold ourselves for giving. We never hold ourselves by thinking. Whatever is in our mind, that's what goes, and that changes our lives. So last year, in November, I became a banker again. Matter of fact, a better job than what I used to have. So this was my personal testimony. I'm not going to talk about finances after that in the messages, I promise. I know it's a sensitive topic. Pastor Saab always look at me, why you do that? I got 10 calls after this, So I apologize for myself. My goal to come over here and talk about is not to talk about what we already know. My goal to come here should be, and this should be to all the folks who have blessed with this thing, who blessed with the opportunity to come on the stage and share what God's given them with, things which audience, congregations don't know or don't think about. That's what this side job is. And that's why it's a tough job. I always have high regards for pastors, all the pastors in Chicago, Milwaukee, anywhere they are, because they're doing a tough job. But telling something which people don't understand yet is tough. We pick and choose आयात from Bible. हम लोग बाइबल में से अपनी चुनी हुई आयात ले लेते हैं जो हमें पसंद है, जो आज के दौर के लिए हमारे साथ काम करती हैं, पर उन आयात को जिन पे हम बिलीव या ट्रस्ट नहीं करना चाहते, हम उनको लेके इग्नोर कर देते हैं. And the real job is to really trust God by taking those tough commandments upon us and use them in our regular life. Sorry, I'm not one of the, I always say that loud and very creative messengers out there. I'm not one of them. I just say simple things, and I hope this changed life. I share my personal testimony today. After I don't think anybody over here knew about it, just so that this might have changed your life. This might have helped you to save, to give God, to live in 80%, because that's what He wants us to do.
My prayer for everybody is that we all get successful. Once God gets his share, then we will not complain that क्यों कोई चर्च नहीं बनता जो शिकागो में क्रिश्चियंस का. It's not responsibility of pastor. It's responsibility of us. हम क्यों कोई चर्च नहीं बनाते? जब हम देना नहीं जानते, तो हम लेने के लिए क्यों उतावल होते? First we need to, and I know many people say, हम आपको क्या पता हम देते हैं. मैं भी सुनता हूँ. आपको क्या पता हम देते हैं, हमने ये ऑर्गेनाइजेशन. Great. But are you giving it for yourself or are you giving it for God? Because he wants you to give for him. That's his commandments. That's what he wants to do. मैं अपने सर को झुकाएं और खुदावन से दुआ करें कि खुदावन हमें तौफीक दे, कि खुदावन हमें इस काबिल बनाए. उस गरीब औरत जिसके पास जो था उसने चंदे में डाल दिया, खुदावन ने कहा कि सबसे ज्यादा इसने दिया, से लेकर उस अमीर आदमी का जो अपना सब कुछ खुदावन को दे देता, हमें उस जैसा बनाना. हम जब कमाएं तो ये सोच के कमाएं कि आए खुदावन हमारी कमाई में बरकत डाल, ताकि हम तुझे देने के लिए ज्यादा से ज्यादा दें. क्योंकि जब खुदा हमें बरकत देता है तो वो हमें टेस्ट करता है, और उस टेस्ट में जब हम वापस खुदा को देते हैं तो एक ट्रस्ट होता है. ट्रस्ट सिखा, इस काबिल बना के हमारे ज़हन इस ट्रस्ट को एक्सेप्ट करें. आज हम जब यहाँ से जाएं तो एक नया मैसेज लेके जाएं, एक नई सोच लेके जाएं. जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं ना, वो जब इस मैसेज को सुने वो एक नई सोच के साथ अपनी कमाई का हिस्सा तुझे, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि तेरी ग्लोरी के लिए, ताकि तेरा नाम का जलाल हो. सब कुछ आपके पैरों में सीधे से. खुदावंद यीशु मसीह